Hey guys, welcome back to Crypto TV. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to present the technical analysis outlook for the two major cryptocurrencies, which are Bitcoin and Ethereum. So I'll be looking at the daily chart and we will try to understand the trend, the price direction with the help of a lot of technical indicators, tools, and we will try to understand what the charts are telling us technically. So let's quickly start it with the Bitcoin first. Now, if you look at the current market price, which is at a very interesting level, which is trading at 31,500. So अगर मैं बात करूँ पिछले 2 या 3 दिनों के मूवमेंट की, तो प्राइस ने more than 7% का जब अप दिया था, I think it was day before yesterday. After that time, the price has actually tested the resistance level of 32,330, and after that closing happens, the price is just hovering around at 32,000 levels only. So you can see that yesterday the price is it was trading at 31,600 or something. Today also, as of now, since the market is open, so till now you can see the price is actually trading at around that level only. So why is that happen? We will talk about that thing when we look into the chart. Now, if you look at the overall trend, still we can say we are in a bearish trend, negative trend is there. However, with the recent upside momentum, you can see that RSI is at 50. Now, if you look at the moving averages here, so 50 EMA is at 33,806, 100 EMA is at 37,090 and 200 EMA is at 40,470. ऑल्सो यहाँ पे हमें कोई लेवल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का चेंज नहीं है, बिकॉज प्राइस एक बहुत ही नाइसली रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. तो अगर मैं सपोर्ट 1 की बात करूँ तो 29,140 लेवल है, सपोर्ट 2 की बात करूँ 25,823 का लेवल है, resistance 1 is at 32,330 and resistance 2 is at 35,335. Let's quickly move on to the chart of Bitcoin. Okay, now if you look at this thing, I'll just zoom it. Okay, now after this good fall, you can see that I think it was complete 1 month or so from the second week of May. You can see this consolidation. So this is a sign, where you can see that after this good fall, the price is somewhat taking a support. So the support level was 29,140 and day before yesterday you can see कि यहाँ पे हमें एक अच्छा upside momentum देखने को मिला. But one thing which is interesting, which is important, अगर आप Bitcoin का daily chart देख रहे हैं, कि जब तक प्राइस ये 32,330 लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स, आपकी जो ट्रेंड रिवर्सल है या बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाइंग है, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. एंड दैट इज द रीजन यू कैन सी दैट ऑन 30th May the closing happens below than this resistance level. Even yesterday, today there is no momentum. So if you talk about cryptocurrency like Bitcoin के हिसाब से dozies spinning tops is nothing. So अभी के लिए हमारे पास कोई momentum नहीं है. हो सकता है कि जो एक evening session होता है, जो मेन हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग सेशन होता है, वहां पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले. सो दैट इज समथिंग, यू कैन सी दैट द प्रेजेंस ऑफ सेलर्स आर देयर, जिसकी वजह से बायर्स अभी उसको कम्प्लीटली अपसाइड नहीं ले जा पा रहे हैं. दूसरी चीज जो मुझे यहाँ देखने में एक अच्छी लग रही है कि प्राइस जो है वो बहुत ही नाइसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. तो रेजिस्टेंस 32,330 है एंड सपोर्ट 29,140 है. तो इन केस अगर सेलर ज्यादा एग्रेसिव होता है एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप देखेंगे कि प्राइस विल कम बैक अगेन टू 29,140 लेवल. सो दिस इज द रेंज ओनली फॉर द बिटकॉइन एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट द वॉल्यूम्स हेयर. जितना टाइम वो इस कंसोलिडेशन में रहा है, उसमें आपके वॉल्यूम्स भी काफी कम रहे हैं. टेक्निकली इफ यू लुक एट अदर थिंग्स, लाइक इफ यू लुक एट द मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन्स, सो कंप्लीटली हम लोग अभी डाउन ट्रेंड में ही इसको कंसिडर करेंगे, बिकॉज प्राइस जो है वो काफी अभी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स से डाउन है, विच इज शोइंग अस अ negative trend. So this is how you can look at the Bitcoin chart. And if you look at the Ethereum, almost the same situation is there. Yes. So Ethereum is currently trading at 1930. Yesterday it was trading at 1950 or something when we were recording this session. So again, we are getting a very small momentum. Why? Because the psychological level of 2000 is very important for Ethereum. तो वही बात यहाँ पर भी है कि अगर यहाँ पर भी हमें बायर्स मिलते हैं
अच्छी एक क्लोजिंग आती है 2000 के ऊपर, तो हमें वहां से ट्रेंड रिवर्स देखने को मिल सकता है, एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है. टिल द टाइम वी कांट से वी आर स्टिल इन अ नेगेटिव ट्रेंड. सो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि आपके बायर्स थोड़ा प्रेशर कर रहे हैं, बायर्स थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं प्राइस को या ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए. Now, if you look at the RSI, which is at 42, if you look at the moving averages, which is 50 EMAs at 2,353, 100 EMAs at 2,624, and 200 EMAs at 2,865. लेवल्स में कोई चेंज नहीं है यहाँ पे. सपोर्ट 1 1724, सपोर्ट 2 1510, resistance 1 2145, and resistance 2 is at 2336. Let's quickly see the chart of Ethereum. Okay, so you might see that there is a correlation in these two cryptocurrencies, and that happens basically because Bitcoin is the main currency, and other currencies correlate with that currency. Now, if you look at here, one thing looks interesting here, that after this small consolidation, which was towards little downside, and with that happened also, the price take a support, here it took a support of 1725. सो रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो इथेरियम के लिए 1724 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. हाल फिलहाल में यहाँ पे जो प्राइस ने एक लो बनाया है वो 1700 के करीब का बनाया है, और वहां से अभी जो फिलहाल मूवमेंट है वो है 1935 की. तो आप देख सकते हैं that after a good rise of 10% yesterday, there was a small downside, which may be because of the profit booking. So it was slightly more than by 2% it was down, and today there is no momentum. So again, let's just wait for the evening session, and then we might able to get more clarity. And if you look at the range here, so very nicely the price is taking a resistance of 2145 and the support of 1724. so अभी इथेरियम के केस में हमको एक ये रेंज मिल रहा है, आप इस रेंज में इसको देख सकते हैं. टेक्निकली इट्स इन अ डाउन ट्रेंड, कोई रिवर्सल का या एक बाइंग, अच्छी बाइंग का कोई इंडिकेशन अभी तक हमें नहीं मिला है. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली कंडक्ट द एनालिसिस फॉर दीज टू क्रिप्टो करेंसी. सो आई होप यू आर लर्निंग समथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.